by road, 2 times more expensive to transport by train, and 0.5 times more expensive to transport by ship. So shipping is one of the cheapest, simplest, most reliable way, and if the National Waterways Project is implemented, Tamil Nadu will benefit in a huge way, sir, and not only Tamil Nadu, all the states, whichever states are being connected through all the national waterway projects. Earlier speaker, Madam Pramod also had told about this. So I would like to re-emphasize to this government to see what can be done to implement the national waterways project, sir. And once again, I thank the minister for retaining the name of the bill in English. But I oppose this bill because only the years changed, sir. Thank you very much. Good. Thank you, honourable member. माननीय सदस्य से आलोक कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं द बिल ऑफ लेडिंग बिल जो एक द इंडियन बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट 1856 को रिपील करने के लिए लाया गया है, यह विधेयक आज़ादी से पहले का है, लेकिन परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी हैं। इसलिए यह आवश्यक हो गया था कि 1856 के एक्ट को वर्तमान के समय के अनुसार से इसमें बदलाव लाई जाए। विधेयक में 1856 के एक्ट में सब्सटेंस या स्पिरिट ऑफ एक्ट में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ नए प्रोविजंस को लाया जा रहा है ताकि जहाज पर माल ढुलाई आदि से संबंधित प्रोविजन सरल हो सके। महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, विश्व में व्यापार सिमिलेस की तरफ बढ़ रही है। द बिल्स ऑफ लेडिंग एक रिसीट का पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, साथ ही साथ ऑनरशिप का पार्ट भी है। इस विधेयक में एक की एलिमेंट भी है। महोदय, वर्तमान विधेयक के सेक्शन 2 में बिल्स ऑफ लेडिंग के अधिकारों को कॉन्साइनी या इंडोर्सी के निहित में उसके हित में किया गया है तथा सभी सामानों की लायबिलिटी जो कि उनके नामों में उल्लिखित है की गई है। महोदय, द बिल ऑफ लेडिंग बिल 2024 के सेक्शन 3 में यह प्रोविजन लाया गया है कि जहाज पर माल भेजने वाले असली मालिक के अधिकारों में छेड़छाड़ नहीं हो। इस विधेयक के सेक्शन 6 में केंद्र सरकार को सक्षम बनाया गया है कि इस अधिनियम के सभी अथवा किसी भी प्रावधान को उपयुक्त समझकर निर्देश जारी कर सकते हैं। महोदय, वर्तमान विधेयक समुद्र के रास्ते माल की ढुलाई संबंधी एक कानूनी दस्तावेज है। भारत में समुद्री विरासत 7,500 किलोमीटर विशाल और गतिशील है। वर्ष 2023 में विश्व के व्यापार में 16% का योगदान रहा है। महोदय, भारत समुद्री क्षेत्र वाणिज्य, कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभर रहा है। यह देश के व्यापार का लगभग 95% मात्रा के हिसाब से और 70% मूल्य के हिसाब से संभालता है। वर्तमान विधेयक के पास होने से यह स्वीकृति मिलेगी कि माल किसी विशेष जलयान से निर्दिष्ट गंतव्य तक सुरक्षित भेज दिया गया है तथा सही सलामत पोत मालिक की कस्टडी में आ गया है। महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी बात रखते हुए माननीय मंत्री जी पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज का ध्यान अपने नारायणी रिवर फ्रंट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में है। विगत वर्षों में मंत्रालय ने 6.62 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटन करने के बाद काम भी शुरू किया गया था तथा 2 घाटों को बनाया भी गया था। गंडक नदी या नारायणी नदी को नेशनल वाटरवेज 37 घोषित किया गया था, जो भैंसा लोटन बराज से गंगा नदी हाजीपुर में नेशनल वाटरवेज 3 में मिलाने की है। सरकार के स्टडी रिपोर्ट में भी यह जलमार्ग विकास के लिए उपयुक्त पाया गया है तथा शिपिंग और नेविगेशन इसके माध्यम से किया जा सकता है। महोदय, सदन के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि नारायणी रिवर फ्रंट के जलमार्ग 37 को विकसित करके पोटेंशियल कार्गो का परिचालन शुरू किया जाए ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज भी जल मार्ग से व्यापार कर सके। महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस बिल पर अपनी बात रखते हुए बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद माननीय सदस्य।
Honorable Member Sri M. Sri Bharat ji. Thank you, sir. Thank you, sir. I rise to speak in favor of the Bill of Lading, Bill 2024. So, largely the intention to really provide legal framework and ensure that any open ends are tied up with this bill is a part of the larger agenda to improve and strengthen the maritime sector. And we support this. In the recent past also, we've seen incidents of illegal goods being shipped in, but then the question mark arises on who takes ownership of it, who has the liability for it. I'm glad that this bill does that and also gives flexibility to the central government to issue directions as and where needed based on the current changing circumstances. Speaking about the maritime sector overall, sir, I'm happy to see that our overall cargo handling capacity has doubled from about 800 million tons per annum to about 1630 million tons per annum as of March 24, indicating the commitment of the NDA government towards developing maritime trade. 9 Indian ports are ranked amongst the top 100 ports globally, and I'm sure over the years many more will show up on those rankings. We're seeing how global events are disrupting maritime trade, like the Russia-Ukraine war, that are leading to shipping delays, higher costs, and impacting all our industries. And a large part of our trade, over 95%, happens through the shipping sector, and 70% of the value comes from the shipping sector. So, sir, there are many things that we need to do to ensure that we remain competitive and increasingly compete with the global market in this. I think the resources that need to be put in this direction, I have a few points on that, sir, which I would like to put in front of you to the government also. One is the high freight costs that have increased in the last few years because of the global uncertainty. How do we reduce that? The next is the shortage of containers. I think India should invest more into developing our own containers. The dependence of carriers from international companies, I think doing more manufacturing. So recently, the Hindustan Shipbuilding Yard in Visakhapatnam was awarded a contract for building 3 ships. I think we need to be doing a lot more of that, and not just building more ships, but building the so-called mother ships, the really large ships which require drafts of 18 meters or more. In fact, in Visakhapatnam, we are unable to receive that because our draft sometimes doesn't meet that depth requirement. And the major disincentive right now is that the shipping lines are expected to invest into that dredging behavior, which often doesn't happen. So the request is, if the government can provide a dredging subsidy to places like Visakhapatnam and other parts of the country, I think we will be able to bring in and reduce the transshipment costs so that we'll be able to do it in our ports itself. The next, sir, is within the shipping ecosystem, a small request from my parliament. We have invested about 100 crores to develop a cruise terminal in Vizag port. But not having an e-visa facility over there is limiting our ability to conduct more cruises over there. Request that the government takes a favorable view on that. I also want to appreciate the government for the turnaround time in major ports. In 2013-14, it was about 94 hours. Now it has come down to 48 hours in 23-24, showing a massive improvement in the efficiency of the shipping sector. And there are many other points, but overall, I think investment into this would be critically relevant for our future, and Andhra Pradesh would be very happy to partner on this, because recently we have announced our maritime policy. We have almost 1,000-kilometer coastline, and we have notified about 14 ports, both large and minor. And we will actively seek the support of the central government and support any regulation that makes this industry more transparent, more agile, and more ready to adapt to the changing global conditions and make us a competitive force in the maritime trade. Thank you. Honorable Member Sri Birendra Singh ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से वाहन पत्र विधेयक 2024 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। समुद्री जलमार्ग निश्चित रूप से आयात और निर्यात
का एक अच्छा साधन है और केंद्र सरकार का एकाधिकार होने के कारण और राज्य सरकार को कोई विशेष उसकी सहभागिता नहीं रहती है। जल परिवहन पोर्ट हमारी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का बहुत महत्वपूर्ण साधन है और जिसपे आयात और निर्यात करने वाली एजेंसियों को माल की सुरक्षा, माल ढुलाई और उनको देश विदेश से आयात और निर्यात करने के लिए इतनी सस्ती परिवहन सेवा संभवतः जो है देश में नहीं है। हम चाहते हैं कि जो विधेयक लाया गया है उस विधेयक में व्यापारियों के माल के सुरक्षा की गारंटी हो, डैमरेज और वारफेज चार्ज जो पोर्ट पे लिए जाते हैं उसके बहाने जो व्यापारियों का शोषण होता है वो शोषण को कम किया जाए और उसका सरलीकरण किया जाए और जो माल डैमेज हो जाते हैं इंश्योरेंस कंपनियां उस डैमेज माल का मुआवजा भी वो देने से कतराती हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो विधेयक लाया गया है वो विधेयक में संशोधन करते हुए कुछ व्यवस्था ऐसा किया जाए कि ताकि इंश्योरेंस कंपनियां समय पर व्यापारियों के उनके डैमेज का भुगतान समय सीमा के अंतर उपलब्ध करा दे। हमारा जनपद वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, सरकार ने फैसला किया है कि गंगा में जल परिवहन के द्वारा यात्री के आने जाने की सुविधा और साथ ही साथ माल ढुलाई के साधन भी हम वहां उपलब्ध कराएंगे ताकि परिवहन भाड़ा कम होने से व्यापारियों को लाभ हो सके, महंगाई कम हो सके। लेकिन अफसोस की बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि जनपद वाराणसी में मिल्कीपुर में वहां पोर्ट बन रहा है, करीब 3000 परिवार गरीब हैं जो बसे हुए हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, उनको जबरदस्ती बेघर किया जा रहा है। वहीं बगल में एक भगवान बुद्ध के नाम से संस्थान है, 50 एकड़ की भूमि को जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है और वाराणसी से लेकर के हल्दिया तक, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो बलिया हो, पटना हो, जहां तक वो सेवाएं जाती हैं वहां पर बन रहे पोर्ट पर जो किसानों की जमीन आसपास की है, जहां सड़क जो बन रही है उनको ठीक तरीके से मुआवजा जो है नहीं दिया जा रहा है। वाराणसी में जो परिवहन की सफलता का प्रतिशत है वो 0.01% भी नहीं है। एक बार यात्री सेवा को लेकर के यात्री परिवहन जल मार्ग से भेजने का प्रयास सरकार ने किया और उस यात्री परिवहन की बात यह हुई कि गंतव्य स्थान से तो समय से चली, बहुत ही माला फूल और बाजे गाजे के साथ उस यात्री पोत को रवाना किया गया, लेकिन हर जगह जाते जाते गंगा नदी में इतना बालू का गाद है कि वो फंस जाती थी। फिर वहां से डोजर लगा करके किसी तरीके से जैसे पीछे से ठेल करके आगे बढ़ाया जाता था, फिर आगे जाकर के जो है बलिया में फंस गई, फिर आगे जाकर के वो पटना में फंस गई। अंततः जो यात्रा 15 दिन में खत्म होनी थी वो यात्रा करीब 1.5 महीने बाद जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकी। मैं जानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि बनारस से जल परिवहन सेवा को शुरू किया जाए,
इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां आवश्यक धन उपलब्ध करावें ताकि गरीबों को मुआवजा मिल सके, ताकि गंगा को और गहरा किया जा सके, ताकि वो परिवहन सेवा ठीक तरीके से अपने गंतव्य स्थान पे चल सके। पानी गंगा में नहीं रहता है, सिंचाई के पंप स्टेशन बंद हो जाते हैं, किसानों की सिंचाई नहीं हो पाती है, गर्मी के दिनों में लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। तो कल्पना कीजिए कि ऐसे स्थिति में जो है जल परिवहन सेवा कैसे वहां चलाई जा सकती है। इसलिए मैं आपसे इस विधेयक पर अपनी बात रखने के लिए आया हूं कि आप आवश्यक धन उसके लिए उपलब्ध कराइए, और जो मैंने पहले कहा कि जो आयात और निर्यात करने वाले व्यापारी हैं उनका शोषण न हो सके, उनको इंश्योरेंस हो सके डैमरेज और मार्फेज चार्ज के जरिए, ये सारी व्यवस्था आप करें ताकि ये सस्ती परिवहन सेवा देश को उपलब्ध हो सके। मैं माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री अरविंद सावंत जी। Thank you, Chairman, sir. The bills of leading bill 2025-24. On this bill, I would like to express my views over here. The Honorable Minister has placed it with some recommendations, some comments on it. While doing so, he spoke about the Asmita of India. I did not understand where the Asmita lies in the bill. Because the bill was a colonial bill, was there in 1925, which was based on the Visby rules, Hogan Visby rules. Those have been changed. Simplification has been done. You yourself have accepted it, that you have done a simplification in the bill. The major changes in the bill is replacing the term rules with applicable rules reflecting modern standards. The bill also grants the central government the authority to amend these rules through notification in the official gazette, allowing for a swift updates while maintaining parliamentary oversight. I welcome this bill. It's not that I'm opposing the bill, but there are certain lacunae in it. The perspective of the bill, the aim of the bill, the object of the bill. While doing so, do we look at the fact, what is happening practically? When you say that the substantial aspects of the said act are relevant in the present context, since it is a pre-independence legislation, the language therein requires simplification without changing the substance or spirit of the provision, so as to bring in line with the drafting practices followed in recent Indian statute, and in order to facilitate ease of understanding. With the ease of understanding and ease of business, there are two terms are different little bit, I feel. Simplification of the language of the provision of the Act by dividing long sections into sub-clauses in the bill for ease of understanding to the extent possible without changing the substance or spirit of the provision. The fact that you have not changed the spirit, not the structure also, not the substance also. So what is the change in it? And what for it has been brought? Just for the sake of that, it was a colonial bill. Now Indian government is bringing this bill. So therefore the Asmita is coming in your mind. I don't know where the Asmita is lying in this. But the fact remains, sir, some of the clauses when you say that right of stoppage of transit or claims for a freight not to be affected. Now right of stoppage of in transit, the pirates are also stopping it. What is the provision to protect that? Something has to be seen in any port. The jurisdiction of the sea miles is given to the state government. Certain level, certain areas, certain kilometers, the state government will control. Beyond that, the central government will control. International border also comes in. It happens in the case of the fishermen also. But now the case is that stoppage, when you want to do the stoppage, any right of stoppage in transit or any right to claim freight against the original shipper or owner,
any liability of the consignee or endorsee by reason or in consequences of his being such a consignee or endorsee or of his receipt of the goods by reason or the inconsequences of such consignment or endorsement. Again, this is not a simpler language. When you said you wanted to simplify, it is not simplifying it. It is creating more confusion. So let us be very simple on this thing. And the most dangerous part of it is, as far as I am concerned, I feel that the central government may give such direction as may deem necessary for carrying out all or any of the provisions of this act. Now there lies the issue. There it is challenging to the federal structure of the country. It's my opinion, because we have a maritime board in the state. Now what will happen to the maritime boards in the state? You want to do something good. The loading is done at one port, the unloading will be done at the other port. In between, the transit is there. In transit, I have said about the pirates also. Now once it arrives over here, what exactly we are going to, the consignee will be, or endorsee will be responsible for suit and everything. That is correct. That's the correct provision. But the fact remains, sir, when you want to do this, you have to have a good ports and have to have a maritime board which is functional at the state level. Now, that maritime board should take care of what exactly the central government wants, or you want it through this bill, whether that maritime board is going to carry that responsibility or not. Who is going to carry it? Central government. Or central government will monitor it or give a directive to the maritime board. Or you are going to make a maritime board non-functional? That answer has to be given by the minister. I feel it is a rather very, evasive action of the central government in the maritime board of the state government. Now, as far as Mumbai and Maharashtra is concerned, you are well aware, you come many times in Mumbai. The Mumbai port was the best port of the country. Of late, you have gone for a ward one. There is opposition, strong opposition, resentment is there, strong opposition, the agitations are going on. I do not want to politicize the issue over here. But when you are developing it, you are bringing the sand from the Gujarat to ward one Bandar to reclaim the land over there or sea land over there. Okay, good. Why not from Mumbai port? If you do it, the draft of the Mumbai port will increase automatically. You need sand, you bring it, the dredging has not been done, the stilting has not been done for a long years. When I am demanding it for last 10 years in this parliament, you people are not doing it. Why you are not doing this, sir? And where from this business will go? Where it will go? Not Mumbai port. Ward one will come, it will take some time. Okay? For whom you are doing it? $1 million question. Everyone knows who are holding the ports now. And therefore, while doing so, I, with a folded hand, request you, don't ignore Mumbai. Don't have a revengeful action. Mumbai is not only ours. Mumbai is the country's port. Mumbai is the capital, financial capital of the country. The business goes in Mumbai. Don't ignore Mumbai port. The dredging could have been done easily by when you want to reclaim the land at Ward 1. Dredging, the sand should have been taken from Mumbai port and should have been brought over here. It is not being done. And I feel with the bill, the intentions are good, the simplification is good. It's not a question of Asmita, it's a question of business itself. To make a good ease of business, these provisions are there, I can understand that. But I expect you, at least Sonowalji, during your tenure, as you are taking some right steps, some policy, in additional policy I'll tell you. Now the encroachment is, you have given some, Mr. Shankar is the secretary I think over there with your department. He has given some optimistic answer to me now because the encroachments which are there on the port had to be removed and they should be rehabilitated. There also we have to go for a policy. If you are going to do the ease of business, that also is hampering. So that also has to be thought that you have moved a bit in this direction. I, with full delight, say thanks to that. But we'll have to come to a final achievement by rehabilitating those people who are residing over there. That should also be done. The Mumbai port should be taken up. You must give a priority for the redevelopment of the Mumbai port. Sir, thank you so much, sir. Thank you so much. धन्यवाद जी, धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री रविंद्र वाइकर जी.
धन्यवाद सभापति महोदय। बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2024 पर बोलने का अवसर देने के लिए पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, पठानकोट परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी और सरकार का सहृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये विधेयक समुद्री व्यापार यानी मैरीटाइम ट्रेड को सुगम और पारदर्शी बनाने तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने गहरे पानी वाले मेगा पोर्ट वाधवन की आधारशिला रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। 76,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पोर्ट दुनिया में शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। यह भारत की वैश्विक समुद्र व्यापार का केंद्र यानी ग्लोबल ट्रेड हब बनाने में मदद करेगा और भारत की निर्यात क्षमताओं को यानी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी को दोगुना करेगा। इस परियोजना से 12 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा। बिल ऑफ लैंडिंग बिल 1856 के कानून का आधुनिकीकरण किया गया है। मैं अब बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2024 के विषय पर यानी 25 के विषय पर आता हूं, जो 1886 के पुराने कानून को हटाकर एक आधुनिक विधेयक लाने की दिशा में कदम है। ये भारत की व्यापारी समुद्री व्यापार प्रणाली को दुनिया के बेहतरीन मानकों के अनुसार विकसित करेगा। सभापति महोदय, बिल ऑफ लैंडिंग का कानूनी जो ढांचा है एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो शिपर और मालवाहक के बीच अनुबंध को प्रमाणित करता है। ये माल की स्वामित्व यानी हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और दायित्व एंड लायबिलिटी को स्पष्ट करता है। इसका परिवर्तन का अधिकार है, राइट ऑफ ट्रांसफर। विधेयक में ये प्रावधान है कि प्राप्तकर्ता और तीसरा पक्ष थर्ड पार्टी जिसे स्वामित्व हस्तांतरित किया गया है वो सभी माल से संबंधित अधिकार प्राप्त करेगा, यानी ईजीएस हो जाएगा। बिल ऑफ लैंडिंग का निर्णायक प्रमाण यानी कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ कार्गो विधेयक स्पष्ट करता है कि यह बिल ऑफ लैंडिंग में दर्ज विवरण की माल का प्रमाण होगा, जिससे किसी की विवाद की स्थिति में यह दस्तावेज निर्णायक होगा। यानी अभी कई सदस्यों ने भी कहा कि यहाँ जो रेट जो कुछ होगा तो उसके ऊपर अपने दस्तावेज जो अभी ये बिल है वो उसके ऊपर निर्णायक होगा। ये इसके अंदर कानून के अंदर ये बिल के अंदर इसका स्पष्टीकरण किया है। केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति इसके अंदर है। सरकार को यह अधिकार होगा कि ये विधेयक क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकता है। इस विधेयक का सकारात्मक प्रभाव यानी इम्पैक्ट ऑफ द बिल यानी नौकावाहन व्यापार शिपिंग ट्रेड को आसान बनाएगा, माल ढुलाई को यानी ट्रांसपोर्टिंग की कार्गो हैंडलिंग को बढ़ोतरी देगा, लॉजिस्टिक सेंटर को मजबूती मिलेगी, निर्यातकों को एक्सपोर्ट और व्यापारी टेंडर्स के लिए सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित कर सकता है। मैं इसके माध्यम से आपके माध्यम से भारत में समुद्री व्यापार का विकास महत्व बताना चाहता हूं कि 2024 में भारत के प्रमुख बंदरों में कार्गो हैंडलिंग की क्षमता यानी मात्र 800 MTPA की जो थी, जो मार्च 2024 तक 1400 MTPA हो गई है, यानी दुगनी हो गई है। 98 पोर्ट मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट पूरे हुए गए हैं, जिनकी लागत 32,000 करोड़ रुपए है। इन परियोजना का वार्षिक पोर्ट क्षमता 230 MTPA है, यानी उसमें वृद्धि हो गई है। इनलैंड वाटरवे पर माल ढुलाई 2014 में 18.1 थी MMT थी, जो 2024 में 133.03 MMT हो गई है। लगभग 7 गुना बढ़ोतरी आई है, समृद्धि आई है, वृद्धि आई है। क्रूज भारत मिशन को मुंबई से लॉन्च किया गया, जिसमें भारत में क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सभापति महोदय, जिसमें मेरी कई मांगे है, जिस मांगों में मुंबई में क्रूज भारत मिशन का त्वरित विकास होना बहुत जरूरी है। अभी कई सदस्यों ने कहा कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
वो भी उसका सशक्तिकरण और अच्छे से होना चाहिए। मुंबई को क्रूज टूरिज्म को हब बनाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द इस मिशन को विस्तृत रूप देना चाहिए, ये मेरी पहली मांग है। उसमें दूसरी मांग है, जो मेरा एरिया आता है नॉर्थ वेस्ट मुंबई में, वहां वर्सावा करके एरिया इलाका है, समुद्र के बाजू का इलाका है, उस वर्सावा जेटी का निर्माण होना बहुत जरूरी है। वर्षा और उसके जुड़े तटीय क्षेत्रों में जलमार्गों के माध्यम से मुंबई से जोड़ने के लिए वर्सावा जेटी का निर्माण होना बहुत जरूरी है। इसके पहले भी मैंने कहा था कि वर्सावा जेटी का निर्माण जितने जल्द हो सके उतना, माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे मिला भी था कि वर्सावा जेटी का निर्माण होना बहुत जरूरी है। मुंबई और कोकण के बीच जलमार्ग की भी आवश्यकता है, जो सालों से लोगों ने मांग की है। कोकण के किसानों और व्यापारी के लिए, विशेषकर फल और सब्जी उत्पादनों के लिए ये बेहद आवश्यक है कि जिनके उत्पादन जलमार्ग से माध्यम से मुंबई तक सुगमता से पहुंच सकते हैं। अगर मुंबई और कोकण के बीच वाटरवे विकसित किया जाए तो खराब होने वाले सामान को जल्दी व सस्ते पहुंचाना जा सकता है। इसलिए वाटर ट्रांसपोर्ट की वृद्धि हो जानी चाहिए, इसके लेगा और उसकी आय में वृद्धि होगी। मुंबई, कोकण और अन्य क्षेत्रों में जलमार्ग एवं पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और विकसित करने की जरूरत है। ये विधेयक भारत की समृद्धि और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को विश्वसनीय बनाने के लिए एक बड़ा कदम, लेकिन इसके साथ हमें पतन और जल मार्ग के आधारभूत ढांचे को भी सुधार लाना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। बिल ऑफ लैंडिंग 24 हमारे व्यापारियों उद्योगपति का सुरक्षा और पारदर्शिता देंगी। मुझे विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों पर जल्दी से जल्द कार्रवाई करेंगी और भारत को समृद्धि और लॉजिस्टिक का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री भास्कर भगाड़े जी। अध्यक्ष महोदय, बिल्स ऑफ लेंडिंग विधेयक 2024 वरती मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो। हे बिल बिल्स ऑफ लेंडिंग विधेयक 2024 हे भारतीय बिल ऑफ लेंडिंग अधिनियम 1856 निरस्त करून शिपिंग आणि लॉजिस्टिक आणि समुद्री व्यापार प्रक्रियांना अधिक आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने आणलं गेलं आहे। महाराष्ट्रामध्ये मोठी समुद्र किनारपट्टी आहे। या किनारपट्टीवरती अनेक बंदरं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये सुद्धा किंवा किल्ले असतील, बंदरं असतील बांधण्यात आली। माजी पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या नावाने स्थापन झालेलं JNPT बंदर असेल किंवा आत्ताच नव्याने महाराष्ट्रामध्ये पालघर या ठिकाणी वाढवण बंदर होतंय। हे बंदर आज जरी होत असेल परंतु त्याच्या पाठीमागे सगळ्याच शासनकर्त्यांचं फार मोठं योगदान आहे आणि या माध्यमातून परदेशामध्ये आयात निर्यात मोठ्या प्रमाणावरती होणार आहे। हे जे विधेयक आज आणलं जातंय हे फक्त एक सुधारणा नसून त्यातून अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता या निर्माण होते। या विधेयकाने व्यापार सुलभ होण्याऐवजी काही महत्त्वाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे। यामध्ये विधेयकामध्ये डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लेंडिंगला पूर्णपणे कायदेशीर मान्यता देण्यात आलेली आहे, परंतु यामुळे ग्रामीण भागामधील शेतकरी असतील, छोटे व्यापारी असतील, शिपिंग कंपनी, लॉजिस्टिक उद्योग यांना अडचणी येऊ शकतात। भारतातील अनेक भागामध्ये अद्याप डिजिटल पायाभूत सुविधा नाहीत आणि त्यामुळे मोठ्या उद्योगांसाठी हे फायदेशीर असलं तरी लहान व्यापार आणि शेतकऱ्यांसाठी हे बिल अडचणीचे ठरू शकते। त्याचप्रमाणे आपल्या देशातील इंटरनेट सुविधा सायबर सुरक्षिततेच्या मर्यादा लक्षात घेतल्या नाही। जर डेटा लीक किंवा सायबर हल्ला झाला तर व्यापारिक व्यवहारांची सुरक्षितता धोक्यामध्ये येऊ शकते। आंतरराष्ट्रीय शिपिंग नियमांशी हे विधेयक मेळ बसताना दिसत नाही आणि यामुळे व्यापार करताना अनेक अडचणी येऊ शकतात। त्यातून भारतीय शिपिंग कंपन्यांचं मोठं नुकसान होऊ शकतं। विधेयकातील नियमामध्ये व्यवहार पारदर्शक होईल असे भासवलं जात असलं तरी व्यवहार मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी अधिक फायदेशीर ठरतील असं मला वाटतं। छोट्या व मध्यम व्यापारासाठी हा कायदा प्रतिकूल ठरू शकतो, कारण अनेक प्रक्रिया केवळ डिजिटल असल्यामुळे ते केवळ मोठ्या कंपन्यांसाठी सोयीस्कर होतील। सरकारने यामध्ये लहान आणि मध्यम उद्योजकांसाठी स्वतंत्र तरतुदी करायला हव्यात, त्या केलेल्या दिसत नाही। भारतीय शिपिंग आणि लॉजिस्टिक क्षेत्र अद्याप आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या पातळीवर पोहोचलेलं नाही।
युरोप, अमेरिका यासारख्या देशांमध्ये डिजिटल व्यवहारासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, परंतु भारतातील बहुतेक लहान बंदरं असतील किंवा मालवाहतूक कंपन्या असतील अद्याप या प्रणालीसाठी सज्ज झालेल्या दिसत नाही. आणि म्हणून सरकारने प्रथम देशांतर्गत पायाभूत सुविधा किंवा लॉजिस्टिक या बाबतीत सुधारणा करून नंतर आंतरराष्ट्रीय मानकांचं अनुकरण करावं असं मला वाटतं. आपला देश हा कृषीप्रधान देश असून माझ्या महाराष्ट्र राज्यातून विशेषतः नाशिक असेल, दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातून मोठ्या प्रमाणावर शेतीमालाची निर्यात होते, परंतु वारंवार बदलणाऱ्या आयात निर्यात धोरणामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. निर्यात धोरणामध्ये दीर्घकालीन स्थिरता आणण्यासाठी उत्पादन खर्चाच्या आधारे हमीभाव निश्चित केला गेला पाहिजे. माझ्या दिंडोरी लोकसभा किंवा नाशिक जिल्ह्यामधून कांदे असतील, द्राक्ष असतील यांचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावरती घेतलं जातं, परंतु वारंवार निर्यात बंदी केली जाते आणि त्याचा फटका किंवा परदेशी देश आयात शुल्क आकारतं आणि त्याचा मोठा फटका हा कांदा किंवा द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो. शेतकरी सातत्याने कांद्यावरील निर्यात शुल्क माफ करावं, पाठीमागे 40% निर्यात शुल्क होतं ते 20% केलं. आजही माझ्या मतदारसंघामध्ये लासलगाव ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांदा उत्पादक बाजारपेठ आहे. त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी सकाळी कांद्यांचे लिलाव बंद करून निर्यात शुल्क 0% करावे अशा प्रकारची मागणी केली आणि त्यामुळे हा शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावरती या माध्यमातून नुकसान होतंय. साखर आणि इथेनॉलच्या संदर्भामध्ये सुद्धा सरकारची अस्थिर धोरणं त्यामुळे हा उद्योग एक संकटात आलेला आहे. एकीकडे साखर निर्यात बंदी केली जाते, दुसरीकडे इथेनॉल निर्मितीला बंद केलं जातं आणि आयात करून परदेशातून साखर आयात केली जाते. ह्याही गोष्टी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहेत. त्याचबरोबर मी सरकारला या निमित्ताने विनंती करतो की शासनाकडे कृषी असेल, महसूल यंत्रणा आहे किंवा नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून भविष्यामध्ये कोणत्या पिकाची लागण झाली, त्याचं उत्पादन किती होणार, देशाची गरज किती आहे, त्याचप्रमाणे उत्पादन किती जास्त झालंय किंवा किती कमी होणार, किती निर्यात करावं लागेल, किती आयात करावं लागेल याचा विचार करून आयात निर्यात धोरण ठरवावे अशा प्रकारची अपेक्षा मी या निमित्ताने आपल्याकडे व्यक्त करतो. आमच्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये निफाड या ठिकाणी डायपोर्ट होतोय, परंतु तो प्रश्न बऱ्याच दिवसापासून प्रलंबित आहे. एका बाजूला वाढवण बंदर होत आहे, दुसऱ्या बाजूला माझ्या मतदारसंघामध्ये निफाड इथे डायपोर्ट होतोय, परंतु त्यासाठी ज्या आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून तो डायपोर्ट एका बाजूला वाढवण बंदर होतोय आणि दुसऱ्या बाजूला हा डायपोर्ट जर झाला तर माझ्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मग कांदा असेल, द्राक्ष असेल, डाळिंब असेल किंवा विविध शेतीमाल निर्यात करण्यास मोठ्या प्रकारे मदत होणार आहे. निफाड डायपोर्ट हा रेल्वेद्वारे वाढवण बंदराला जोडला जावा आणि वाढवण बंदराला जोडणारे जी कनेक्टिव्हिटी रस्त्यांद्वारे ती वाढवली गेली. त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी वाढवण बंदराच्या बाबतीमध्ये त्या भागातील शेतकऱ्यांच्या किंवा मच्छीमार लोकांच्या किंवा स्थानिक लोकांच्या ज्या अडचणी आहेत त्यामध्ये लक्ष घालून मदत करावी अशा प्रकारची मागणी मी या ठिकाणी या निमित्ताने करतो. हे जे विधेयक आहे हे केवळ एक पोकळ सुधारणा आहे असं मला वाटतं. याने केवळ फक्त मोठ्या कंपन्यांना फायदा मिळणार असून लहान व्यापारी आणि शेतकरी मागे पडतील आणि म्हणून डिजिटल प्रणालीचा अवलंब चांगला असला तरी त्यासाठी आवश्यक सुरक्षा आणि सुविधा विकसित केल्याशिवाय त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही. कृषी क्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेऊन निर्यात धोरणामध्ये ठोस सुधारणा करण्यात आल्या नाही. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी, कृषी जिल्ह्यांसाठी स्पष्ट धोरण आखून निर्यातीला बळ देणारे उपाय करावेत. निर्यातीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा, शीतगृहे, गोदामे यासाठी मोठ्या प्रमाणावरती निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि सरकारने शेतकऱ्यांना स्थिर बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस योजना आणाव्यात. त्यामुळे ग्रामीण किंवा छोट्या शहरातील शेतकऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. फक्त मोठ्या उद्योगपतींसाठी या विधेयकाचा फायदा होणार नाही याचा सरकारने पुनर्विचार करावा अशी विनंती मी आपल्याला या वतीने करतो. धन्यवाद. धन्यवाद जी. माननीय सदस्य ऑनरेबल मेंबर बिरोतो फर्नांडिस जी. Thank you, Speaker, sir. I would like to thank my party leadership for giving an opportunity to speak on this very important bill. Sir, this Bill of Lading 2024 was introduced on August 9, 2024.
It seeks to replace the Indian Bills of Lading Act 1856. Now, the Act provides a legal framework for issuance of bills of lading. A bill of lading refers to a document issued by a freight carrier to a shipper. It contains details such as the type, quantity, condition, and destination of goods being carried. Now, the Act states that a bill of lading is conclusive evidence of goods on board. It grants following persons all rights of suit and liabilities regarding the goods. A, the receiver as per the bill of lading. Second, any third party to whom the receiver may transfer the ownership of goods. Sir, when we are discussing the bill of lading, it is but necessary that we get into a discussion of shipping and shipping related matters, because the entire issue is related to shipping. In this context, I suggest the government should facilitate to modernize the shipbuilding industry in India, as we have huge potential to compete the shipbuilding industry in the world with the global industry of shipping. Now, when we speak of shipping, the name that pops up is the Shipping Corporation of India. The Shipping Corporation of India has played a huge role in contributing towards India's economy, and both during peacetime and during hostilities. But provisions in this bill makes one wonder what the real intention is by bringing this bill. Has the government involved all the stakeholders in formulating the bill? Or is it to dilute the stake of Shipping Corporation of India? At first glance, it seems that the bill is to carry forward the legacy of this government to hand over every aspect of our economy to their most favored businessmen. It's not a mere allegation, but because we know who it is. Now, there are certain factors that I would like to suggest to the government when the government is calculating the impact on the shipping industry by trying to bring this bill. Some of the related problems plaguing the shipping industry are container shortage, surge in freight rate and shipping cost, shipping delays at the ports, and turnarounds at the ports. Now, some of the major problems are at customs and immigration. Complex documentation, inaccurate or incomplete paperwork, goods misclassification, valuation issues, delays due to strict regulations, potential for corruption, lack of transparency in the process, and difficulties with classifying restricted or prohibited items, often leading to significant delays in import and export shipments. Key points about custom clearance issues in India at the ports are documentation challenges, missing or incorrect information on customs declaration, invoices, and other required documents that can cause delays. Incorrect classifying goods can lead to incorrect duty calculations and clearance issues. Valuation disputes. Disputes over the assessed value of imported goods can lead to delays and additional charges. Regulatory barriers. Complex system of import and export regulations, including restrictions on certain items which can be difficult to navigate. Bureaucratic hurdles. The customs clearance process can be lengthy and involve multiple approvals leading to delays. In some cases, custom officials may demand bribes to expedite the clearances of goods. So this bill of lading has to have provisions to ensure such practices are not allowed at the customs or at clearance places at the port. Lack of transparency. Importers may not have clear information on duty rates and other custom requirements, creating uncertainty. Technology issues. Glitches in the electronic customs clearance system can further hamper the process. Sir, recently, when we speak about shipping industry,
the government has formed a 12-member panel to advise the government on the national shipbuilding mission. But sadly and surprisingly, why are the Indian shipbuilding designers not placed on the panel? Our shipbuilders have done tremendous progress and contributed in the shipbuilding industry in a big way. Some are involved in designs of corvettes, frigates, destroyers, passenger vessels, but none of them have been included in this particular panel. They are not only not included, but here we come to know that people who are nowhere connected with it are on the panel. I smell a rat because it looks like an entire exercise which may finally end up in breaking Shipping Corporation of India, and who will gain from that but the most favored businessman friend of the government. Sir, while presenting the budget, the Honorable Finance Minister announced a 25,000 crore maritime development fund, a revamped shipping building financial assistance policy to address cost disadvantages faced by Indian yards, a credit note scheme for shipbreaking in Indian yards to promote circular economy and infrastructure status to large ships above a specified size were also announced. Today, India holds less than 1% of the global shipbuilding market, but aims to break into top 10 ranking by 2030 and top 5 by 2047. Why not? We have to. But with such backward-looking provisions, are we going to break into the top 10? Sir, coming to my state of Goa, everybody knows we are situated on the west coast of the country. For centuries, there was sea trade that has occurred, taken place from foreign countries into Goa, and the shipping industry has prospered. The thrust of the government should be also to ensure that the shipping lines are exploited to the maximum so that it benefits not only the state but also the country in terms of economy. More trade, more business. Goa, unfortunately, was ruled for 450 years by a colonial power, again which came through the sea route. And as irony would be, today we are again become slaves of a trade which has come by sea, where the coal is being brought from Australia, and when it comes to the Mormugao Port Trust, which is now Mormugao Port Authority, again the coal has to go to other states like Maharashtra and Karnataka. So they are expanding tracks, they are expanding roads, and in the bargain, the beautiful state of Goa is getting destroyed. To the extent, a few days back, even the iconic, most revered temple of Lord Kapreshwar was demolished by authorities to facilitate this expansion. For what? And people who tried to save the temple have been booked. Even yesterday, sir, for facilitating this coal trade, when they were trying to expand the railway tracks, even the sarpanch, a lady sarpanch, has been booked by the authorities. Even the local authorities have become agents of the central agency to suppress. So I request you, sir, this bill that has been introduced, let us use it for the benefit of all the states and the country, instead of using it for certain trade which is going to destroy certain places like the way my state of Goa is being destroyed. Thank you, sir. Thank you, honorable member. माननीय सदस्य श्री अभिजीत गंगोपाध्याय जी. I thank my leader Narendra Modi ji, and also I thank Honorable Speaker while speaking in support of this bill. The bill, in the objects of the bill, what has been stated by the Minister, no, it is there.
for ease of business and for giving some directions to the persons involved in the business, which will take India at least 50 years ago, 50 years preceded from this time today by use of this bill. Now, one of the respected members were talking about sending some some goods were indulged in water, having some furnace oil, etc., and nobody knew who was the owner of the goods. Here, without giving any blow to the earlier bill, which has been repealed by this act, without giving any blow, it has been stated clearly that the consignee would be accepted as the owner of the goods, where the property in the goods would transfer to the consignee. It is a deeming provision. It is a fiction of law that while before this, in the bill of lading, the consignor and consignee was mentioned, and it was the consignor who was taken as the owner of the goods. Here, by using one legal fiction, it has been done that the property in the goods means the ownership of the goods will be deemed to have been transferred to the shipper. That is the owner of the ship through which the good was being sent and also the consignee to whom it has been sent. The result, suppose 1,000-ton smuggled coal from West Bengal, is transported by ship from Bengal to some other country outside India, and if it is caught by any of the Navy or any of the water monitoring authority, then the first question would be, who sent this 1,000 tons of coal? This coal is coming to my mouth because of the reason that there is a coal scam, huge coal scam in West Bengal. Who is the owner of this coal? Who is the owner of this coal? Now nobody will be able to find it out. Who is the owner of the coal? Here it has been done that it is deemed, it will be considered, it will be accepted that the person who is shipping the coal is the owner of the coal. That's the advantage which has been created by this bill in modern terms instead of a bill of 1800. A bill which was framed in 1800. A new bill was required, is always required to come to bring the new terms in the Act. Here another very important is Section 2, where the liabilities also, not only the rights, liabilities also has been fastened upon the shipper, that is the consignee or the person who is transporting the good. Bill of lading is actually a paper, a document, which shows that who is sending the goods, what is the amount, where it is being sent, and to whom it is being sent. Bill of lading is a very simple thing. Bill of lading, some informations are given. Now it was always considered that the person who is sending the bill, he is the owner. Now in this bill it has been stated
at the very outset, that is the object and reasons, to transfer of rights of suit and all liabilities to the consignee. If something happens to the good, who would sue? The person who has some insurable interest in the good. Why I am saying insurable interest? Because anything which is to be shipped is bound to be insured. So the person who has some insurable interest in the goods will sue. Now, if the person is not available, if the shipper says that yes, somebody booked it, if the consignee said yes, I sent some money, but the person who sent it is never found, so there will not be any suit. But in the meantime, the shipper and the consignee has already been faced, has already been accounted for huge loss. So in this bill, it is stated that who will extract the money, that is the damages caused due to some problems which has been shipped in the goods, and not only the goods, some goods which is mentioned in the bill of lading but has not been given in the ship. Here the word ship includes also any carriage by way, by road. Shipping does not always mean that it has to be shipped by a ship. Shipping is a term of insurance which covers also the carriage of goods by transporters through road. So, here if something is required to be done in the court of law, the person to whom the good has been transferred for shipment, not the ownership, to the consignee, not the ownership, he can also sue the person who is liable for the damages. This particular provision, along with the opening up of the whole thing, that is Section 5, proposed Section 5, the central government may give such directions as it may deem necessary for carrying out all or any of the provisions of this Act. It has an opening to the national trade and also the international trade. For doing something, if some direction is required, a person is to go to the court of law, where a litigation will continue for 20 years. Whereas the government has taken the responsibility of giving directions. If the direction is bad, court has also already vested with the power by Constitution of India to declare it as bad. So whether it is a bad decision or good decision, I am not on that. I am on the question whether the government can issue certain directions for the betterment of the transport by sea or by road. The bill of lading is not only used only in ship, it is also used in transport and also in multimodal transport act. Under multimodal, we have one multimodal transport act which shows that some goods will start, say, from Calcutta to Paradip, from Paradip to some other country, from that country, from the port to some factory. For the whole thing, one bill of lading can be used. This is said multimodal transport. So this multimodal transport will also come within the meaning of this act. So while supporting the bill, I say that it has opened up an area for our country which is very progressive, which will bring India at least 50 years ahead of our time. Thanks to all. I conclude.
Thank you, honorable member. Honorable member, से M. Gurumurthy ji. Thank you, Chairman, sir, for giving me the opportunity to speak on the Bills of Lading Bill 2024. Sir, the new bill simplifies and improves the efficiency in the way we do business in terms of maritime trade, sir. Honorable Chairman, sir, I will call out few strengths and positives of the bill. First one, replacing the old 1856 Act is a big step towards modernizing and standardizing the trade in making India complete with global markets and standards. And second point, sir, this bill brings clarity in the supply chain and in protecting the interest of shippers, freight carriers, and third-party buyers, reducing any potential disputes, sir. And third point, sir, as India becomes fifth largest economy of the world, and in the view of the strides that we are making in making India movement, truly complements such changes to the bill, sir. Chairman, sir, as a representative from Andhra Pradesh, a state which has second longest coastline in India, I know how important this law is for strengthening India's maritime trade. Sir, in this time, I want to recall, under the leadership of our ex-CM Sri Y. Jagan Mohan Reddy Garu, Andhra Pradesh has taken several steps to boost the blue economy and seen a substantial growth. To refer briefly, sir, building 3 new greenfield ports at Bhavanapadu, Machilipatnam and Ramayapatnam, and developing 9 fishing harbors to support fishermen, exports and substantial practices, sir. These harbors increase fishing and prawn catching by approximately 4.5 lakh tons, contributing 9,000 crores gross value added, sir, and providing employment of 1 lakh fishermen community, sir. Chairman, sir, I see there is a big necessity and action on our, sir. As outlined, Part 10, 13th Schedule in Infrastructure and Special Economic Measures of the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014, the Government of India committed to develop of a new major port at Duggarajpatnam in Tirupati Parliamentary Constituency, sir. Despite this provision, the project initiation has not yet commenced, sir. While that was expected to kick off by 2018 itself as a phase 1, sir. Chairman, sir, I urge the government to expedite the development of shipbuilding and port infrastructure at Duggarajpatnam in Tirupati parliamentary segment, sir. This project holds immense potential and regional economic growth and national maritime advantage, sir. Honorable Chairman, sir, I would like to call out few challenges of this bill, sir. First one, although the bill recognizes the rights of bona fide holders of bills of lading, it does not transferring bills giving support and encouragement to the small traders in propelling the maritime economy, sir. And second point, sir, the dispute resolutions are not heavily discussed, which could lead to unpleasant scenarios between consignees, shippers and the liability, sir. Rights under the bill, sir. And third point is, sir, I would like to call out for training programs to build the capacity formation that is needed in terms of infra, coordination and seamless coordination, sir. Thank you, sir. Finally, we support this bill, sir. Thank you, honorable member. माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर जी. धन्यवाद सभापति जी.
कि आपने मुझे लैंडिंग बिल पे अपनी बात रखने का मौका दिया। सभापति जी, 1856 में जो कानून बनाया गया और मैंने बिल पढ़ा, क्या पढ़ने के बाद मुझे एहसास होता है कोई बदलाव नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया। तो सरह लेने में और प्रचार करने में तो मौजूदा सरकार को मेडल अलग से देना चाहिए कि कॉपी पेस्ट कर दिया और सरह ले लिया कि ये हमने किया है। नाम बदलने में और सरह लेने में हमारी सरकार को महारत हासिल है, जबकि हकीकत ये है कि ये इंटरनेशनल लॉ है जिसके आधार पर सभी देशों को काम करना पड़ता है। अगर सरकार कुछ बदलाव चाहती थी तो इसमें बिल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर सकते थे। ये डिजिटल युग है, चर्चा होती है और सब जगह, आप तो फोन से लेकर सब जगह जो है डिजिटल बातें होती हैं, लेकिन फॉर्मेट आपने कागज में ही रखा है। कई देशों के बिल इंडिया में ही बन रहे हैं मैन पावर की वजह से। वहां मैन पावर कम है, यहां मैन पावर ज्यादा। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ जाता तो बहुत से भारतीयों को रोजगार मिल जाता। लेकिन मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि हमारी सरकार का रोजगार देने में उनको बड़ी परेशानी है और वो रोजगार देने के खिलाफ, इसलिए उन्होंने शायद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं रखा। जैसे उदाहरण, ऑस्ट्रेलिया में कोई माल चढ़ता है जहाज पर, उसकी इन्वेंट्री यहां बनती है, उसके लैंडिंग बिल भी इंडिया में बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर देते तो उसका बैक एंड फॉर्मूला हमारे पास आ सकता था। इससे देश को फायदा होता और हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2016 कानून के तहत कई राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित होने थे, परंतु अभी तक सभी नहीं बने। यह जलमार्ग बन जाते तो बाढ़ व सूखे की समस्या से भी निजात मिल सकती थी, लेकिन सरकार को बाढ़ से भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे भी आम जनता को परेशानी होती। पेट्रोल और डीजल की जो खपत है, अगर ये बन जाए जलमार्ग तो बहुत फायदा जो है वो खपत कम हो सकती है और बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन सरकार का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अपनी भावनाओं के साथ इस बिल को अपोज करता हूं और मैं कहता हूं कि सरकार अगर चाहे तो हमारे सुझाव को मान के कुछ अच्छा कर सकती है, वरना फिर मैं कहूंगा दोहराते हुए कि सरह लेने में और नाम बदलने में सरकार को महारत हासिल है। इसके लिए पुनः मेरा अनुरोध है कि इनको मेडल दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य जी प्रदीप पानीग्राही जी। Speaker, Honorable Chairman, sir, I support this bill introduced by Honorable Minister Port and Shipping, Sri Sonawal ji. This bill is very important as far as the international trade and India's position as a global player, developing our economy in a national and global field. This bill replacing the old bill, which is outdated in nature, and to comply our international norms and protecting our national interest in modern time. This is a bill which is giving an ample opportunity with new sections, new simplifying the structure and bringing the many changes in old bill to make it a visible to in port sector to giving ample opportunities. As the different section of this bill also reflects on the many speakers on opposition side criticizing this bill, but I see this bill is a very important bill as far as the compliance with international obligations, streamlining regulations, broadening eligibility for ship ownership, establishing maritime utility framework, streamlining administrative framework, including integrating coastal and inland waterways, simplifying regulations. All these are very important factors that was covered under this bill. As far as the under this bill, as Odisha is also affected under this bill, Odisha's coastline is around 480 kilometers. So we need the honorable request the honorable minister to focus Odisha, as the Prime Minister is also focusing in the Purbodaya as a East policy. Odisha plays a major role in the coming in an area, and Prime Minister regular visit to the state, and the double engine sarkar that works in the center and the state
This bill also play a major role. I request the Honorable Minister to focus developing new ports, particularly in Astaranga, in Puri district, and Bahuda at Ganjam, and Palur in Chhatrapur of Ganjam district. This will do a wonderful job as far as the economic growth of Odisha is concerned. As the communication is a very important part of the nation, as per the seaport is concerned, or the airport is concerned, or the railways are concerned, or the roads are concerned. So in modern days, the communication play a major role. I hope this bill brings in a major changes in as far as the maritime trade is concerned. I hope the Honorable Minister during this bill, passing of the bill, he will focus on Odisha to bring new ports with new provisions to make a Viksit Bharat agenda of Honorable Prime Minister to 2047. And Odisha will play a major role by providing a growth of contribution to the national growth as far as economy is concerned. Thank you for giving me an opportunity in this bill. Thank you. Sri Sachidanandan, Honorable Member Sachidanandan. Good evening, Speaker, sir. The exports from India have come to a standstill as shipping companies hiked shipping charges nearly 6 times. Various sectors such as jute, seafood, food processing and species have been disrupted. Items are all in stock. Due to this, hundreds of people have lost their jobs. It is said that the reason for the increase in price is the shortage of containers. Higher import costs lead to higher prices for goods ranging from toys to computers. Exporters say that the union government is doing nothing to tackle the crisis. Before COVID, a container that was sent abroad for rupees 2 lakh now costs up to rupees 12 lakh. The fare from Kochi to Shanghai, China was $1,200 to $1,500. China was now it was now risen to between $5,000 to $6,000. The Kochi-Dubai container fare has been increased from $300 to $350 to $1,000, and the Kochi-Colombo fare has been increased to $1,500 to $2,000. Due to the COVID lockdown, shipping containers are stuck at ports due to the shortage of containers. The Kerala Exporters Association said that the shortage of containers has increased due to reduced the imports from China. Due to the reduced imports from China, the shipping companies are reluctant to deliver containers to Kochi to higher profits at other ports. So, the lading bill amended as to control the shipping charges. Thank you very much, sir. It looks like. Yes. What one? Rajaram Singh, Honorable Member. सभापति महोदय, ये शिपिंग बिल बात तो की जा रही है कि 1856 के हम कानून को बदल रहे हैं इसके जरिए, लेकिन दूसरा सच ये है जो बड़ा सच है कि जैसे रेलवे और विभिन्न क्षेत्रों में प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया है, इस शिपिंग बिल के जरिए भी प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा तरजीह दी गई है। अभी माननीय सदस्य ने भाड़ा वृद्धि की बात कही, तो अंग्रेजी विरोध का नारा है, लेकिन कंपनीकरण की कोशिश है।
इस शिपिंग बिल के जरिए भी है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। एक दो बात इस संदर्भ में कहना चाहूंगा। सेतु समुद्रम का किस्सा तब पढ़ा था जब सांसद यहां नहीं थे। एक अखबार में रिपोर्ट पढ़ी कि सेतु समुद्रम से बड़े जहाजों को ले जाना है और उसके लिए भारत सरकार ने एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि सेतु समुद्रम कुछ भी नहीं था, वो लंका के बीच में वो पहाड़ बना हुआ है, प्राकृतिक बनावट है, और राम रावण युद्ध नहीं हुआ था। तो एक तरफ राम मंदिर पर राजनीति की जाती है और दूसरी तरफ कॉरपोरेट हित जहां टकराते हैं वहां पर यह एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है। तो व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये कौन सा अपॉर्चुनिज्म है? और दूसरी बात, एक समय देश में दाल का संकट हुआ था और उस समय अफ्रीकन कंट्रीज में बड़े कॉरपोरेट घरानों ने जमीन खरीदी किस पर दाल उत्पादन होगा और अडानी के जहाज से वो दाल भारत आएगा। तो यह जो फेयर का एक डील है, इसको इस बिल के जरिए और सुगम बनाया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये ठीक नहीं है। और तीसरी बात जो मैं कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि शिपिंग इंडस्ट्री में जो रेगुलर काम है, नियमित रूप से नियमित बहालियों को छोड़ करके अब कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की बहाली हो रही है और उनको बहुत ही कम पेमेंट दिया जा रहा है, उस पर खटवाया जा रहा है दिन रात, जबकि वो रेगुलर काम है। और इस पक्ष पर बिल में कोई चर्चा नहीं है कि जो शिप बनाते हैं, शिप चलाते हैं, शिप पर काम करते हैं, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी जीवन स्थिति क्या है, मजदूरों की स्थिति क्या है, और उनको रेगुलर बहाली अगर रेगुलर काम के लिए पहले था तो आज उसको क्यों खत्म किया जा रहा है और उसको भी उचित मानदेय या वेतन नहीं दिया जा रहा है, न उनके जीवन की अच्छी स्थिति है। तो महोदय, यही मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में एक बात और कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। पारादीप बंदरगाह सरकारी है उड़ीसा में, उसके बगल में एक प्राइवेट कंपनी को बंदरगाह देने की कोशिश की गई। उन्होंने उस समय, हालांकि वो बहुत प्रोटेस्ट हुआ, फिर वापस हुआ वो निर्णय, लेकिन उसमें कोशिश ये थी कि हमारे आयरन ओर को सीधा उस अपने प्राइवेट बंदरगाह से वो अपने देश में ले जाएं और अपने यहाँ आयरन बना करके और वो सेल करें या उसको अपना इस्तेमाल में लाएं। तो ये जो धीरे धीरे ये कोशिश चल रही है, उड़ीसा के, गुजरात की कहानी हम बराबर देख रहे हैं कि प्राइवेट पोर्ट पर किस तरह से बड़े पैमाने पर ड्रग्स आ रहे हैं, कुछ सीज हो रहा है और बाकी देश के अन्य हिस्सों में जा रहा है, हमारे नौजवानों की सेहत खराब कर रहा है। तो इन तमाम पक्षों पर इस बिल में एक बात होनी चाहिए कि उसके ऑलराउंड जो असर हैं, जो इरोजन के हैं, पर्यावरण संकट के हैं, उन सारे पक्षों पर इस बिल में चर्चा होनी चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। श्री N.K. Bremchandran. Thank you very much, Mr. Chairman, sir, for giving me this opportunity to take part in the discussion on the bills of lading bill 2024. Sir, I was surprised to hear the arguments and observations from the Treasury benches that it is going to make drastic changes in the maritime sector because ample business opportunities will be provided after passing of this bill. Sir, there is nothing to oppose or nothing to support in this bill. Rightly, the honourable member has observed in his opening remarks that it is a repeal and reenactment of a pre-independent legislation. But I would like to add two more words to along with this. It is a repeal and reenactment of a pre-independent legislation without any changes and without any reforms to the tune of the time. What is the scope of this legislation? Sir, the pre-independent legislation was Indian Bills of Lading 1856. It is a law that governs the transfer of goods shipped by the sea. It defines the rights and liabilities of carriers and consignees. And I have gone through the Indian Bills of Lading 1856. So the same bill, same provisions, and the contents, everything is the same. Then what is the scope of bringing a new bill without any changes in order to suit with the situation, in order to suit with the new liberalized economic era? Because this bill is enacted in the year 1856.
That is 170 years ago this bill was passed by the British legislature or British India government. And even now, after 170 years, the government of India, led by Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, and even the Port Minister also has spoken in his opening remarks that 1,500 obsolete legislations has already been repealed. And we want to decolonize the legislations, as in the case of IPC, Criminal Procedure Code, and Indian Evidence Act, but copying it in a different form. Nothing else is there. There is no in-depth wisdom is not being put on the legislation. That is the reason by which I am saying there is nothing new so as to oppose or so as to support the bill. Sir, only one new provision has been incorporated in the bill, that is Clause 5 of the bill. Sir, what is Clause 5 of the bill? The central government may give such directions as it may deem necessary for carrying out or any of the provisions of the bill. So other than this, the entire provisions are the same. There are three clauses mainly. Number one is rights under bill in loading west in consignee or endorsee. And the second one is no right of stoppage in transit and right to claim freight against the original shipper or owner. And the third point is regarding the bills of lading in the hands of a consignee is a conclusive evidence of the shipment as against the master. This is the content of the bill 1856 as well as 2025 bill is same provision, same content, nothing is doing. So my pertinent question I would like to ask to the Honorable Minister, you have incorporated a new provision, Clause 5, that the Government of India is empowered to give directions from time to time as it deems necessary, either for all the for implementing either all the provisions or any of the provisions of the bill. So I would like to know from the Honorable Minister, even if there is no such provision in the bill, a bill passed by the Parliament, Government of India is empowered to give directions so as to implement the provisions of the bill. It is implied. There is no need of an explicit provision in the bill that the government can give directions for the implementation of the provisions of the bill. So what is the purpose of incorporating a new provision, Clause 5, in the bill, just to show that we have reformed the bill? That is the only reason why we say new bill has been brought in. Otherwise, you have to come with so many changes. Sir, I have got 5 suggestions. Let me come with these positive, very concrete, positive suggestions. So the number one is the lack of adequate safeguards for Indian exporters and importers. Sir, bills of lading are one of the most essential documents in international trade, as they serve as both the receipt for goods and the title to the goods being shipped. However, the provisions under the bill fails to provide adequate safeguards to Indian exporters and importers, the backbone of the country's trade sector. Sir, exporters who are primarily small and medium-sized business in India often lack the resources of bargaining power to negotiate the terms of international shipping contracts. While the bill introduces several standardization measures, it does not address the challenges faced by the Indian exporters in avoiding fraudulent practices, especially when dealing with the foreign shipping companies and agents. So I suggest a special provision for Indian exporters to have stronger legal recourse in case of disputes involving bill of lading, particularly in relation to foreign shipping companies. This could include establishing a dispute resolution mechanism specifically aimed at protecting the Indian interest. That is the first suggestion. Sir, 5 suggestions. It's very positive suggestions. And the second one is regarding the potential for increased cost of doing business. Sir, the bill, there is a lack of clarity on the regulatory framework that will govern the fees and charges related to bills of lading. The bill potentially opens the door for increased fees and charges associated with the issuance, transfer and please 2 minutes. Issuance, transfer and negotiation of these documents. These costs could place additional financial burden on Indian businesses, particularly the export and import. So my point is that the cost competitiveness is a critical for Indian business to succeed in the global market. So sir, I suggest a regulatory cap on fees and charges for bills of lading, ensuring that this do not unduly burden the Indian MSMEs. And the third suggestion, sir, regarding the maritime sector and the carriage of goods seized by the sea. There is another bill is also carriage of goods by sea bill. Sir, there are provisions there are contradictory provisions are also there. So I would like to urge upon the minister, kindly go that there shall not be a contradiction with these 2 bills. And the fourth one is very, very, very important suggestion, that is the technological advancements and the digital bills of lading. Sir, this is the most
post-modern era of communication technology, even the artificial intelligence era. Sir, the issue is, it is limited focus is there on the digital transformation of the maritime industry. In an era of rapidly advancing technology, the electronic bills of lading, the use of electronic bills of lading has become the global standard in international trade. Several countries, including major trading nations like United States, Singapore, UK, have already embraced digitalization in the shipping sector. India, however, has lagged behind this area. The bill makes, sir, 1 second. The bill makes only passing mention of the electronic bills of lading and fails to provide a robust framework for their adoption and regulation. The lack of clarity in digital bills of lading could make India's maritime industry less attractive to international shippers and importers who increasingly prefer the speed, security, and efficiency of digital solutions. Sir, with these suggestions, I make 2 points. That is regarding the Vizhinjam International Seaport Limited. There was a commitment on the part of the government of India that after the completion of the Vizhinjam International Seaport Limited, there is an agreement, commitment on the part of the government of India that viability gap funding will be provided to the Vizhinjam International Port. But now the government of India is withdrawing from their commitment to provide the VGF. That has to be taken into consideration. And the last point, sir, regarding my constituency, there is a Kollam Port Honorable Minister, Mr. Suresh Gopi is also sitting. He is also from my constituency. He is born and brought from my place, and we studied with me in my college. And he is well aware of this fact. Sir, my point is that is Kollam Port, it has started since long. Unfortunately, it is not been operational. Yes, the government of India clearance has been given. There is a, sir, 1 second. There is a Minikoi to Kollam ship travel possibility is there from Lakshadweep. That may be considered. With these points, I in a way support the bill. Thank you. Sri Nishikant bhai. Taking 3 of my points. Thank you. धन्यवाद सभापति महोदय। सर, ये बिल देखने में छोटा लगता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि सत सहिए के दोहरे, जो नावक के तीर देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। इसका क्या इम्पैक्ट है? अभी हमारे पहले जो स्पीकर बोल रहे थे, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया पिछले 10-11 साल में, शायद उसके बारे में वो पूर्णतया समझते नहीं हैं या समझाना नहीं चाहते, या अपोजिशन का जो रोल है सभी बात का विरोध करना, वही विरोध करना चाहते। ये 1876 का एक्ट है, और इस बीच में भारत सरकार ने इस सदन की जानकारी के लिए 1876 के एक्ट के बाद 3 बार इंटरनेशनल कमिटमेंट किया। एक 1921 में जब अंग्रेज यहां थे, ब्रसेल्स का समझौता हुआ और उसने कहा कि लैंडिंग बिल के ड्राफ्ट को हम बदलेंगे। और दूसरा, जब कांग्रेस की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार पहले 1978 में, और फिर 1989 में जब राजीव गांधी जी थे, उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पर यह बातें कही कि लैंडिंग के बारे में जो वहन पत्र है, जिसके बारे में कि लाना ले जाना, सामान कैसे, किसकी डिलीवरी होगी, कौन उसका मालिक होगा, उसके लिए हम एक्ट में संशोधन करेंगे। और 1992 में फाइनली नरसिम्हा राव ने उस एक्ट पर साइन किया। 1921 से लेके आज तक 2025 तक किसी भी सरकार ने यह नहीं सोचा कि 1876 के इस एक्ट को बदलना है। अभी रिपीलमेंट की बात हो रही थी सभापति महोदय, इस सदन की जानकारी के लिए, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन प्रेमचंद्रन जी आपके जानकारी के लिए, क्योंकि आपने कहा कि सरकार वाहवाही लेती है कि 1500 बिल उसने पास कर दिए, मतलब रिपील कर दिए, खत्म कर दिए अंग्रेजों के समय के। मैं आपको केवल 1874 का, इस सदन की जानकारी के लिए और इस देश की जानकारी के लिए, 1874 में एक बिल अंग्रेज लेकर आए, ड्रामेटिक एक्ट बिल, क्योंकि उनको यह लगता था कि आजादी के आंदोलन, जो ये ड्रामा है, जो नाटक है, जो गीत है, ये जो गाया जाता है, सड़क पर उतरकर जो लोग गाते हैं, ये देशद्रोह है। और उन्होंने एक ड्रामेटिक एक्ट बिल बनाया 1874 में, जिसमें यह कहा जाता था कि 10 लोग यदि सड़क पर
डांस करते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, ड्रामा करते हुए यदि मिलेंगे, उन सबों को जेल हो जाए। उस एक्ट के आधार पर सभापति महोदय, क्या आपको नहीं लगता कि दुल्हा जो है वो बारात के साथ जेल चला जाता? 1876 का एक्ट था, 2024 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बदला। क्या इस देश को यह पता है कि इस तरह के एक्ट हमने बनाए? बांस जो कि प्रत्येक घरों में होता है, वो घास है, उसको हमने वृक्ष बना दिया। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी जो है बांस पर चलती थी। यह भी 150 साल से एक्ट था। क्या इसमें गरीब परेशान नहीं हो रहा था? क्या उसको रिपील नहीं कर देना चाहिए था? ये दो एक्ट मुझे लगता है कि सदन के लिए और ये देश के जानकारी के लिए है कि 1500 एक्ट जो हमने बदले हैं, उसमें से किस किस तरह के घटिया कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए थे और उसको बदलने की आवश्यकता पड़ी। वैसा ही 1876 का एक्ट है। अब आप समझिए कि पूरा, अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी, आज ही चर्चा चल रही थी कि हम टैरिफ पर बात करना चाहते हैं। यहां कांग्रेस के युवराज आकर बात करेंगे कि उस पोर्ट पर जो है पकड़ा गया, ड्रग्स पकड़ा गया, वो पोर्ट ऐसे हो गया, वो पोर्ट ऐसे हो गया। कभी आपने सोचा कि 26/11 कैसे हो गया? बॉम्बे में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, कभी उसके बारे में आपने सोचा कि आपके पास क्या अधिकार, ये लैंडिंग बिल है क्या आखिर? इस साल से लेके पिछले साल, पिछले 4-5 साल में यदि आप देखेंगे तो इस देश में लगभग 50,000 करोड़ का ड्रग्स जो है पकड़ा गया। ड्रग्स, हेरोइन ड्रग्स, जो हमारे युवाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। यदि आप बायलैटरल की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हमारा बढ़ रहा है और चाइना जो है, चाइना से गुड्स नहीं आना चाहिए। आप कहते हैं सिंगल प्लास्टिक यूज जो है हमको बंद कर देना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस हमने लगा दिया। स्टील सेक्टर में जो डंपिंग यार्ड हमने यहां बना दिया है वो यहां नहीं आना चाहिए। एग्री? हम आपके सारे बात से सहमत हैं कि अमेरिका यदि टैरिफ यदि लगाएगा तो हमारा व्यापार जो है दूसरे जगह बढ़ना चाहिए और उसके लिए अपना देश बनाना चाहिए। हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी साहब, उन्होंने बहुत कहा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। एग्रीड, हमको कुछ नहीं पता है भैया, लेकिन कभी ये लैंडिंग बिल तो पढ़ लेते कि हमने क्या किया। आज आप समझिए कि आप किसी कंट्री के साथ, जैसे पाकिस्तान के साथ हम अपना व्यापार नहीं करना चाहते। पाकिस्तान को हम दुश्मन देश मानते हैं और पाकिस्तान के साथ हमने व्यापार रोक दिया। चाइना के साथ हम अपना बिजनेस नहीं बढ़ाना चाहते। हमारे सिक्योरिटी का सवाल है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है। टेक्सटाइल में हम पूरी दुनिया में आज जिस तरह से बांग्लादेश के हालात हैं और पूरे चाइना के हालात हैं, हम टेक्सटाइल के साथ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यदि बढ़ना चाहते हैं आप, तो यदि शिपिंग संघाई पोर्ट से हुआ और संघाई पोर्ट सिंगापुर चला गया, यदि किसी आदमी ने चाइना से टेक्सटाइल को हमारे यहां के लिए भेजा और उसने कहा कि ये सिंगापुर जाएगा और सिंगापुर से नाम बदलकर वो फिर यदि हिंदुस्तान आ जाएगा, तो हम तो कहेंगे कि इसका जो डेस्टिनेशन पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, वो तो सिंगापुर है। उसी तरह से ऑयल के बारे में मान लीजिए कि कई एक देशों के साथ हमने, अभी सीरिया को हमने बैन किया हुआ है, लीबिया को हमने बैन किया हुआ है। हमारे यहां फर्टिलाइजर की बहुत कमी है। फर्टिलाइजर का जो जिससे बनता है फर्टिलाइजर, चाहे नाइट्रेट हो चाहे फॉस्फेट हो, ये यदि आता है तो उसमें कई एक जगह बैन है। तो जो पोर्ट है, कहां से ये कंसाइनी को दिया गया, कहां शिप पर ये लोड हुआ, कितना केजी लोड हुआ, कहां से ये शिप कहां गया, उस शिप से फिर वो भारत में किस तरह से आया, या भारत में जो लोड हुआ। जैसे मैं आपको बताऊं कि ब्लैक मनी की बहुत बात होती है इस देश में। ब्लैक मनी के बारे में 72-73 का जो रिपोर्ट है और 2012 में इसी सदन में जो ब्लैक मनी पर माननीय प्रणब मुखर्जी साहब ने, तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने, जो बाद में राष्ट्रपति हुए, उन्होंने जो व्हाइट पेपर जारी किया, व्हाइट पेपर में उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी जनरेट होने का सबसे बड़ा साधन 85% इस देश का ब्लैक मनी केवल और केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से हुआ। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिल है उसके बारे में कभी सोचा है आपने कि हम यहां से भेज रहे हैं, मान लीजिए कि टेक्सटाइल भेज रहे हैं
और वहां से जो है आर्म्स का हमने ले लिया ऑर्डर कि हम जो है स्टील की फैक्ट्री ला रहे हैं जी, आर्म्स खरीद कर ला रहे हैं जी, या कोई भी चीज ला रहे हैं, इसके बारे में इस देश में 1876 से लेकर आज तक एक बहुत बड़ा वैक्यूम रहा। जिस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं कि ई बिलिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग होनी चाहिए, प्रेमचंद्रन साहब आपकी जानकारी के लिए पूरी दुनिया में 45 मिलियन बिलिंग होती है, लैडिंग होती है। उसमें से पूरी दुनिया, आपने अमेरिका का उदाहरण दिया, क्योंकि दूर का ढोल सुहाना होता है। अमेरिका को मान लीजिए कि अमेरिका बहुत डेवलप्ड है, बहुत अच्छा कर लिया होगा, चीन बहुत डेवलप्ड है, बहुत अच्छा कर लिया होगा, यूरोप पूरा अच्छा कर लिया होगा। इस सदन की जानकारी के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग लैडिंग का केवल और केवल 2.1% होता है पूरी दुनिया, केवल 2.1% होता है। यदि 2.1% होता है तो हम तो कम व्यापार करते हैं। हमारी इकोनॉमी तो 4 ही ट्रिलियन की है। यूएस की इकोनॉमी हमारे से कितने आगे होगी, यूरोप की कितनी आगे होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना का कितना ज्यादा होगा। वो क्यों नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक? तो इसीलिए हम जितना कर पा रहे हैं शायद इस दुनिया में बहुत कम ऐसा देश होगा करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम बिल पर चर्चा करते हैं तो बिल को एक सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। इस बिल के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, यह समझिए कि सबसे पहले है कि इससे क्या फायदा होगा। पार्टी डिटेल्स मिलेगा कि किसका प्रोडक्शन है, किस कंपनी ने यह प्रोडक्शन किया है। यदि स्टील आ रहा है, मान लीजिए स्टील सेक्टर को ही लेंगे, तो चाइना की किस कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया है, अमेरिका की किस कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया है। उसके बाद आएगा कि उसको इंपोर्ट का लाइसेंस किसको दिया गया, यह दूसरा सवाल है। इंपोर्ट के लाइसेंस के बाद जब वो पोर्ट पहुंचेगा तो पोर्ट में जो है उसको यह बताना पड़ेगा शिप ऑनर को, कि शिप ऑनर को यह बताना पड़ेगा कि इस इंपोर्ट के लाइसेंस के लिए यह ऑथराइज था, उसने इस शिप पर चढ़ाया। उसके बाद यह जिम्मेवारी जो है शिप ऑनर की हो जाएगी। और शिप ऑनर के बाद हमारे यहां जो इकोनॉमी होती है, जैसे नीरव मोदी का किस्सा हुआ। नीरव मोदी का किस्सा क्यों हुआ? क्योंकि बैंक की जो गारंटी थी, जिसको एलसी कहते हैं, जिसके आधार पर कि भारत में कोई सामान आएगा या भारत से कोई सामान जाएगा, तो जो बैंक एलसी खोलता है, जो आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, उसमें से आपको पता है कि पंजाब नेशनल बैंक का परेशानी हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का परेशानी हुआ। यह परेशानी के लिए वो कौन सा आदमी है जिसने कि एलसी मंगवाया है,